Hello traders, this is Chinmay. So guys, this is Saturday and I wanted to utilize this Saturday along with all the trader community. So what I've done, I have posted one question on Instagram that it's a weekend Q&A and whatever questions that you have in your mind, okay. So write it down and I'll try to answer. And as you can see, I've got so far more than 200 questions, so it's not possible to type and answer every question. So what I'll do right away, I'll start answering all those questions here only on YouTube. Okay. So I'll pick those questions and one by one, I'll stick that question or paste that question on one notepad and then I'll try to answer them. Okay. So here's the first question. The best risk reward and strategy accuracy. Okay. There is a question which comes up with this particular uh, thing that everyone asks about. Uh, what is the better risk reward ratio and what should be the strategy accuracy? Okay, I'll divide this question into two to three different parts. First, if you are a very small time trader, small time means a small time frame that you prefer for your trading, for example 1 minute time frame, right? Then you're definitely a scalper. If you are a scalper, then your accuracy may not be that great. Okay, understand this part. Your accuracy may not be that great, but your risk reward ratio should be a very good risk reward ratio, because in 10 trades, suppose only 4 trades are going in your direction. Okay, and in that case, if your risk reward ratio is likely to have 1 is to 3, 1 is to 4, or 1 is to 5, then you can be a good scalper. So think about it. If you are an intraday trader who trades in equity or maybe in Nifty, Bank Nifty, looking at the spot chart or future chart, right? So at that time, if your risk reward ratio is somewhere around 1 is to 2 and your accuracy is somewhere around 50-50, okay, you're still a good trader. At the end of the month, you will make money. Now think about it. Those who are option sellers or those who prefer to take theta as an advantage, right? Generally, if you'll see, the accuracy of their trade is very high because there's some natural advantages. But as an option seller, think about iron condor strategies or think about any other strategy, okay, which mainly comes up with option selling. They don't have much good risk reward ratios, okay, but yes, over the period of time they have some consistency, so they mint money slowly, steadily. They mint money. Their risk reward ratio is not that great, but the strategy accuracy is very good. Say like 7 or 8 out of 10 goes in their favor. If no, then the losses will be small. Okay, that way you can define your risk reward ratio looking at your risk appetite and looking at your trade setups, and then define your uh, risk reward ratio and accuracy according to that. Okay, all right. So there's a question: which chart is better to find trades, future, index, or bank nifty? Okay, now here's the another question: that which chart is better to find trades, future or index for bank nifty? Okay, if your setup is actually belongs to volumes, like in your setup, if you're looking at breakouts, breakdowns, or reversal based on volumes, or any type of volume is part of your strategy, then always go with future, because the spot charts are not traded instruments. But if your strategy is a kind of mechanical strategy where you don't see such type of volume confirmations, okay, and then higher breakouts or reversal setups, okay, that belongs to pure price action or sometimes belongs to any indicator, okay, that time you can definitely stick with spot chart. That is no major difference between these two charts, but yes, psychology will differ if you are using volumes in that case. Okay, ऑलराइट. एंड गाइस, अगर किसी ने हिंदी में क्वेश्चन पूछा है तो आई विल आंसर इन हिंदी. ओके. ओके, कैन आई टेक फुल टाइम जॉब? ओके, can I take trading as a full time job? I assume this is the question. So what I will do, I'll try to answer these questions. These are the psychology based questions, right? So I'll try to answer these questions afterwards, because this will be little longer questions, right? So what I will do is I will mark, okay, some science about this. So I'll take those questions afterwards. Okay, I'll go into more into the system based trading. Okay, mindset कैसे ठीक करे. Okay, all these questions are belongs to psychology.
So I'll definitely answer these questions, but again, it will be better to take a little longer time to answer them now. Okay. So here's a question: how to exit from a losing trade? Okay. Now, this question comes in everyone's mind, especially after losses. Why? Because as a human tendency, generally people are bullish. Like if the market goes up, they know I'll go for a long trade. And if that trade doesn't give me fruitful result in intraday, suppose I was an intraday trader and that particular trade is not giving me fruitful result, what I will do? Let it be na. I was not using margin, so I'll keep that in my account. Whenever it will go on a higher prices, I will cut it down. That means what you're compromising your day's plan. You started as an intraday trader, and now you're assuming that I will keep it for my swing. And whenever next day, next to next day, whenever it will go above my purchase level, I will exit. If you're a trader and you have a plan means what? Even if you're a swing trader, in swing trading, you think in next 2 to 3 days or next week, over a week, if I think this stock should move 5%, and for that I'm ready to keep 3% as my stop loss or 2% as my stop loss, depends on the levels or your system. And as soon as it is hitting, you should exit. There's two things. Sometimes people put extraordinary money in one setup. Looking at that setup, they think, okay, I get every uh, entry criteria that I'm defining. It is according to that the trade is okay. So what they do, they try to stick with that trade and they try to defend their trade, looking at okay, market conditions are bullish, right? Your trade is not working for you, but market conditions are bullish. US markets are looking bullish, right? Overall, this announcement happened, so the sector looks bullish, and you're denying the price itself. If your price is hitting that particular level, no matter what, you should exit. Okay, there'll be always a next trade, and whenever you're entering, always enter with defined risk. That means the quantity should not be scaling up and down in every single trade. It should be constant. That way you will definitely exit from a losing trade and you'll start searching for the another opportunity. Okay. All right. So okay, there's another question. Okay, should I quit trading? Should I quit job and everything else and start focusing on trading? There's always a side hustle. And whenever you think that I want to quit my job, always prove yourself कि भाई अब के पीरियड में मैं ट्रेडिंग तो करूंगा, लेकिन क्या ये ट्रेडिंग एक्चुअली लाइक जो साइकोलॉजी ट्रेडिंग के लिए लगती है, क्या मैंने डेवलप कर लिया? अब ये क्वेश्चन जब खुद से पूछोगे ना, तो आंसर एक ही आएगा, तो अपने रिजल्ट्स बताओ। ठीक है ना? अगर आपके रिजल्ट से डिफाइन कर रहे हैं कि मैं जो अब जॉब कर रहा हूँ या जो मेरा बिजनेस चल रहा है उससे मुझे काफी अच्छे रिटर्न यहाँ पे आ रहे हैं, मैक्स पोटेंशियल अभी भी है, और मेरे स्ट्रैटेजी में वो एज है या मेरे प्रोसेस में वो एज है कि लॉन्ग टर्म तक मुझे वो मार्केट में बना के रख सकता है, तो वो पहले 6 महीने में आपको प्रूव करा देगा कि हाँ, ये जो स्ट्रैटेजी मैं यूज कर रहा हूँ, ये जो प्रोसेस मैं यूज कर रहा हूँ, उससे मैं जितना मैं जॉब में कमा रहा हूँ या फिर मेरे बिजनेस में जितना रिटर्न आ रहा है उससे तो ज्यादा ही आ रहा है ना? और वो कंसिस्टेंटली अगर 6 महीने आता है तो जाके आप डिसीजन लो। उससे ज्यादा पीरियड लोगे तो और ज्यादा समझ मार्केट में आपकी डेवलप होगी, तो इतना पार्ट तो खुद को, इतना टाइम तो खुद को देना पड़ेगा, राइट? ऑलराइट। ओके। हाउ टू जनरेट कॉन्फिडेंस इन ट्रेड? स्टार्ट maintaining a trade log book. Okay, start maintaining a trade log book. Otherwise, you will never come to know that whether my strategy have any age or no. कॉन्फिडेंस कब आता है? जब आपको पता है कि आउट ऑफ 10 ट्रेड्स एक ही स्ट्रेटेजी में यूज कर रहा है, एक ही एंट्री पैरामीटर यूज कर रहा है, उसी टाइप के मैं स्टॉप लॉसेस लगा रहा हूँ, उसी टाइप से मैं ट्रेलिंग कर रहा हूँ या पार्ट बुकिंग कर रहा हूँ या फुल बुकिंग करके बाहर आ रहा हूँ, और मुझे पता है कि 10 में से 6-7 ट्रेड मेरे डायरेक्शन में जा रहे हैं, मेरा पैसा बन रहा है, तब जाके कॉन्फिडेंस आएगा। ये कैसे आएगा? आपको जर्नल तो बनाना पड़ेगा कि भाई गलत क्या गया, जो गलत गया उसको मैं सुधारूंगा कैसे। ये जर्नल काम करता है कि आपको आईना दिखा देता है कि ये अभी करंट सिचुएशन है, ये रियलिटी है, इसको चेंज करना है, तो जहां जहां लॉसेस हुआ है वहां पे इंप्रूवमेंट का क्या स्कोप है वो देखना है,
उसको इम्प्रूव करना है, मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करना है, राइट? एट दैट पॉइंट यू स्टार्ट जनरेटिंग कॉन्फिडेंस। इवन टू बी वेरी फेयर, अगर आपको वहां पे कॉन्फिडेंस नहीं आता, नहीं अभी भी कुछ मिस्टेक्स हो रही है ना, तो इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, तो आप वहां पे स्केल अप नहीं करोगे। तब तक छोटे कैपिटल से काम करो, जब तक छोटे कैपिटल से काम करोगे आपका पैसा नहीं वाइप आउट हो रहा है, तो कॉन्फिडेंस लूज तो नहीं करोगे। कॉन्फिडेंस लूज कब होता है? अरे मेरा इतना टाइम चला गया, पर टाइम के साथ पैसा भी बहुत गया। तो ये दोनों चीजें जो होती है ना, ये जब माइंड में आनी स्टार्ट हो जाती है तो कॉन्फिडेंस कहीं का नहीं रहता, राइट? ओके। Okay, here's another question, which is really good question. Can buyers make money? So this question is specifically that option buyers. Can option buyers make money? Okay, the answer is yes. Definitely, option buyers can make money, but understand, being an option buyer, you cannot deploy your entire capital. That is number one thing. Option sellers होता ही ये है कि most of the time they're aiming for small gains, and in return, if I'm an option seller and I'm doing a non-directional strategy, okay, for example, I'm selling all option put options simultaneously and markets are not favoring me, they become trending. So in one side I'm taking losses, the other side the losses or there will be a small profit, so I can cut down my trade. So that time, even in a trending market, you will never have huge losses. But what comes up with buying? If I want to go with non-directional buying, so what I need to supposed to do? I need to go for call buying, put buying at the same time. And if market becomes sideways, definitely you will lose from both the side, right? So the buyers have less advantage. And even if a buyer is a directional trader, in intraday, they think that market will definitely go in my direction and I will go for option buying. So, being an option buyer, first target you should have in your mind is try to catch the momentum. Okay, price action setup, everything keep aside. First thing, that whenever I am entering, there's already a momentum established in that trade, so that I can get in quickly, I can get out quickly. Otherwise, if you're a guy who likes to hold it, now, theta will not favor you. So in that case, you cannot make money. So always, if you're a momentum trader and you know your game and setup, whenever there's a momentum, I can quickly come in, and as soon as I'm making decent results, even if it is not going in my direction, I'll be cutting it. That way, definitely a buyer can make money in trading. Okay. Okay. How to recover a losses? Don't think about recovering a losses. Always think about getting into a next trade. Okay. All right. Once you will start thinking about this is the backlog I'm having, it's not an exam, right? Whether this particular paper, this particular subject, I'm having backs now. I need to solve it first, then only I go through next year or next sem. This is like more likely now I have to prepare for the next exam. This is the current day, you're trading on current day. If you're still stuck, your mind, it's still stuck in the previous day or the previous losses, you cannot think rationally and you'll not take the decision accordingly. अदरवाइज हो क्या जाएगा? अरे यार ट्रेड सेटअप अच्छा बन रहा है, बट मैंने इतना ऑलरेडी लॉस कर दिया है, तो मैं यहाँ पे अब छोटा ही ट्रेड लूंगा। आप अगर वहां पे डिफाइन क्वांटिटी जो आपने डिफाइन करके रखी है कि इतने लॉस के सामने मैं इतने क्वांटिटी में लेके एवरीडे ट्रेड करूंगा, और पीछे दिमाग में वो लॉसेस है, दो चीजें होंगी। एक, डर जाए तो वहां पे क्वांटिटी कम हो जाएगी। अगर आपको ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ एक दो बार मेरा ट्रेड सही गया और लॉसेस ज्यादा है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे? जरूरत से ज्यादा क्वांटिटी के साथ में ट्रेड कर लोगे, राइट? तो नेवर थिंक अबाउट द लॉसेस, ऑलवेज थिंक अबाउट द करंट सिचुएशन एंड हाउ यू विल एग्जीक्यूट दैट पर्टिकुलर डे। ओके। ऑलराइट। नाउ दिस इज द अनदर क्वेश्चन which is going into the scalping part. Okay, so the question is, क्या 1 मिनट टाइम फ्रेम सबसे अच्छा टाइम फ्रेम है? द थिंग इज, आर यू कंफर्टेबल टू टेक द हिट ऑफ द मार्केट इन 1 मिनट हियर एंड देयर? Like what I was doing from the morning, I was looking into the scalping setup that is based on 1 minute itself. Okay, I'll quickly tell you the rules.
that every 1 minute, whenever markets will come into ओवरबॉट और ओवरसोल्ड कंडीशंस, ओके, यहाँ पे देखो आप, अब जैसे ही मार्केट एक ओवरबॉट कंडीशन में आ जाती है, ठीक है, वहां पे जहां मुझे एक डिफाइन सेलिंग सेटअप मिल जाता है, मैं वहां पे काम करूंगा, और एंट्री टाइम फ्रेम मेरा 1 मिनट का ही है, ठीक है। लकीली मैं यही सेटअप ट्राई कर रहा था, और यहाँ से मार्केट ने एक ब्रेक डाउन दे दिया, ठीक है ना। तो अब अगर मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 उससे ज्यादा हो जाता है, तो मैं ट्रेल करके एसएल मेरा एंट्री पे लेके आऊंगा, और ज्यादा अगर चला जाता है तो मैं ट्रेल करते रहूंगा। फॉर एग्जाम्पल जो दूसरा ट्रेड गया है, जैसे ही मार्केट वहां पे, मैं देखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखो, ये दूसरा सेटअप है जहां पे मुझे जैसे ही एक ओवर बॉट कंडीशन दिखी, मुझे यहाँ पे कोई सेल ट्रिगर नहीं हुआ, दूसरे ओवर बॉट कंडीशन में यहाँ पे मुझे एक सेल ट्रिगर हुआ है, तो ये मेरा स्टॉप लॉस है, ये मेरा एंट्री है, और वहां से आगे मैं ट्रेड करूंगा। अगर मेरा एंट्री बहुत एग्रेसिव है तो उसके सामने और अच्छे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आ रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन से टाइम फ्रेम पे काम करना, खुद के माइंडसेट को एक सूटेबल टाइम फ्रेम समझते हो। 1 मिनट में होता क्या है, अगर बाय द वे मैं ये जो सेटअप देख रहा था, ये मैं अल्गोस के लिए देख रहा था कि मैं वहां पे अल्गो थ्रू ट्रेडिंग करूँ क्या। अदरवाइज मेरे जैसा ट्रेडर, जो मेरा साइकोलॉजी है, मुझे अलाउ नहीं करता है कि मैं हर 10-10 मिनट पे, 1-1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके डिसीजन लेते रहो। एक, आप थक जाओगे मार्केट में, एग्जॉस्ट हो जाओगे। मुझे ये लगता है पर्सनली, अगर कोई उसमें अच्छा काम कर पाता है तो डेफिनेटली वो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम कर सकता है। आप जितना लंबा टाइम फ्रेम लोगे, जितना बड़ा टाइम फ्रेम लोगे, उतने कंफर्टेबली काम कर पाओगे, ठीक है। जितना छोटा टाइम फ्रेम है उतना ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखो, ताकि अगर छोटे छोटे टाइम फ्रेम में स्टॉप लॉसेस ज्यादा लगते हैं, तो स्टॉप लॉसेस सारे के सारे आपके बड़े ट्रेड में कवर हो जाए, जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेटर बन रहा है, ठीक है। ये माइंडसेट से आप काम कर रहे हो तो डेफिनेटली 1 मिनट का टाइम फ्रेम अच्छा टाइम फ्रेम है। पर्सनली मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इंट्राडे ट्रेड करता हूँ। ऑलराइट, ओके, देयर इज अनदर क्वेश्चन, हाउ टू इंक्रीज योर ट्रेडिंग कैपिटल विथ ट्रेडिंग। अच्छा, तो क्वेश्चन एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि मैं कैपिटल तो बढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन ट्रेडिंग से ही बढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है। पहली बात, थोड़ा थोड़ा अब ये साइकोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन फिर से एक बार, मैं प्रॉफिटेबल हूँ तो ही मैं ट्रेडिंग कैपिटल बढ़ाऊंगा, ठीक है, और मुझे प्रॉफिट भी निकालने हैं ट्रेडिंग से। पहली बात, अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो ना, ये खुद को प्रूव कर देते हो, एक छोटे अमाउंट के साथ में आप कंसिस्टेंटली ट्रेड कर रहे हो, आपको प्रॉफिट्स आ रहे हैं। एट द सेम टाइम आप थोड़ा कैपिटल बढ़ा देते हो, आप देखते हो साइकोलॉजी में कुछ चेंजेस आ जाते हैं, जहाँ पे आप 1-2 लॉट से ट्रेड कर रहे थे, वहां पे 5 लॉट हो जाते हैं ना, तो वो जो मोमेंटम, जो स्विंग्स आते हैं आपके एम टू एम में, ठीक है ना, वो आपके माइंड को थोड़ा डिस्टर्ब कर देते हैं। अगर आप वहां पे ज्यादा विचलित नहीं होते, या फिर वहां पे आपको लगता है कि यस, एट दिस मोमेंट आई एम रेडी टू सी दैट फ्लक्चुएशन इन माय कैपिटल, देन इट्स परफेक्टली फाइन। that way that way you can start compounding whatever profits you are making in those trades. You can start deploying directly to the next trade. It's a very aggressive way of compounding. What I do, I at least wait for a month. If I'm doing 2 trades a day, that means in a month I'll probably do 40-45 trades, right? So in 40-45 trades, if I'll come to know I'm doing very good with that consistent capital, definitely in next one you can think about increasing your capital. Now once you will increase the capital, again start observing yourself, that looking at that m2m fluctuation, am I comfortable? If you're comfortable, then only you can think about increasing the capital. What else? Think about it. In a trade, I'm making small losses, okay, at beginning I'm making small losses, and then after 2 to 3 trade I hit a jackpot, okay. In that jackpot I have made a decent enough amount, like I have engaged with 2 lots buying, and I have made 50-60 thousand rupee profit, okay, a jackpot trade. If you start deploying that entire 60,000 in next trade, right, it will be a really difficult task to make money out of it. That compounding never comes like every single trade you will double, triple your money, right? Keep that 10,000 constant for at least 1 month, and whatever profits that you are making, then decide, looking at your risk, how much capital should I deploy for the next month? Should I go for 20 or 30,000 risk, right? Or capital for that month? That way you can increase your capital.
If you're approaching that way, definitely you can make capital from your trading itself. Okay. And I'll tell you with my experience, once I started getting consistency in my trading, I started gathering the capital from here and there, because at that time, I want to go big. I want to expand my game. I need capital, right? And I want to go in shorter time frame rather than just making it from my capital. At that time, you can definitely display your results, and that way you can gather the capital. But yes, if you want to expand it from your trading capital only, make sure make sure that you will go slowly and steadily and not doing compounding aggressively. Okay. All right. Hmm. Okay, now there's an indicator based question. A few questions I'm skipping just to see कि बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेटिव है या साइकोलॉजी रिलेटेड है। अगर साइकोलॉजी रिलेटेड है क्वेश्चंस तो बहुत ज्यादा टाइम जाएगा उसको आंसर करने में, राइट? आई ट्राई टू प्लान टू कीप आकाश and will come up with kind of broadcast podcast next time, where he will try to answer you more on a psychology based questions. Okay. So the next question is, what are the best important indicators and candlestick can be followed when trading? Okay. Now, a newbie trader, mostly newbie traders always comes up with the mindset that there should be a super indicator, or there should be a super strategy or a setup that will definitely give me huge money every time. Okay. First thing, what are indicators? Indicators are based on price itself. There are two type of indicators. One is a price based indicator, and second is volume based indicator, right? So if any indicator is lagging or based on something, focus on the core part, that is price action. Okay. If you learn price action at a very early stage, it will help you a lot. Okay. That is number one thing. Now, still, if you want additional confirmations, yes, definitely you can go for the indicators. So there are momentum based indicators. There are the indicators which will show you a kind of uh, regression, or you can say a kind of reversal setups where a few extended move happens and then your RSI started showing you overbought, oversold conditions, right? So that time you can think about taking the reversal trade. So there are different indicators. So if you want to go for trend trading, okay, the closest moving averages like 9 EMA or 20 EMA are the best EMS to go for trend trading. If you want to go for the reversal, you can definitely go for RSI. Okay. The other indicators like volume profile is good to understand the volume clusters. If you want to understand the candlestick patterns, I'll prefer to go with the chart pattern rather than single or double candlestick patterns. Okay, because a chart is a psychology of a lot of traders rather than a single double candle. If you want to go for a single double or triple candlestick pattern, go for a higher time frame. Like on daily time frame, if you're getting a long tail doji, that is a reversal signal like a shooting star or a morning star, that day you can definitely think about, yes, the entire day there was a selling, and from midday or at the end of the day there was a huge recovery that happened, right? So next day if market opens gap up or gap down, that day you can definitely think about the trend reversal, right? But that should be on a higher time frame. On a smaller time frame, think about the patterns like double bottom, triple bottom, or consolidation breakout on a 5 minute or 15-minute time frame, even on a hourly time frame. That will give you more rewards. Okay. All right. Okay. Here's another good question, that how to find major support and resistance for the entire day. Okay. Now, every time when I go for trading, okay, for example, I'll show you on chart itself. Let me go on a higher time frame, say 5 minute time frame. It's the ideal time frame to go for intraday trading for me. Okay. So nothing about this particular day. Okay. Here. Now, this is 22nd March. Okay. Market open gap up, and then this is the first 5 minute time frame candle. Okay. And right from that particular candle, entire day market was trading below that particular zone. Next day, if I want to go for trade, next day, if I want to go for trade,
Now, what I see, markets are opening gap down. Okay, there was a gap down. This is the first 5 minute time frame. Okay, market is not showing me any continuation sign. Rather, it started coming up. There was a candle which broke the high of the day. Okay, and now it is moving up. Similarly, here it broke the low and started coming down. Here it broke the high and started coming up. Now, I see two major things. One is the consolidation itself. That was there any major consolidation? These are the major consolidation zones, right? If there was a tussle muscle between buyers and sellers on a previous day, I generally don't enter here, enter here for aggressive trade. Looking at this particular zone, I feel that there may be some resistance, but days high and days low are definitely a very good pointers where you can keep your resistances and support mark. Okay, so for me, this particular zone will definitely act as a nice resistance. There are few days when you will see a clear breakout. For example, if today I want to see that this particular zone to be taken out, I want to go for further trend trading. Think about it. The trade has already established, and now this extended move that already happened from the bottom. It is already moved almost a percent or 150 point in Nifty. Rather, what I will do, I will try to find out any pattern which is showing me respect to previous resistance and a kind of pattern where I can deploy money. So this is resistance, this is resistance. It broke that resistance, made a support, and finally broke it with M pattern or kind of double top. Here, I can definitely think about getting into a reversal trade, keeping this resistance as my stop loss. Okay, so this way you can definitely approach the market. Higher the time frame, higher the resistances. So you can mark even top down approach where you can mark the support and resistances on a higher time frame, like hourly time frame, on a daily time frame. And with respect to small time frame, if there's a confluence between high time frame support resistances and smaller time frame and any pattern that you are looking into there, definitely you can take a trade over there as well. Okay, what can be the smallest stop loss in trading according to your experience? Means what will be the world's smallest stop loss according to your experience? Okay, uh, question is interesting. I'll tell you one thing. Uh, when I was actually practicing, and I thought that I started getting a little grip on price action and on market structure. I'm making a little money. That time, I started developing this mind. Why should I give money to market? Like I don't want to lose anything, and it will be either profits or there's nothing. Okay. So at that time, when I started trading in futures, and future it comes up with a heavy lot. Even one lot can easily give you huge losses if your stop losses are wide. So that time I thought, okay, I should not keep stop losses very wide. And as soon as the market will start moving in my direction, I'll trail my stop loss near my entry pointers. Okay. I'll tell you what will be the psychology when you start approaching these things. Okay, because the question is clearly that what's smallest stop loss according to your experience. So there were few times when I was trading, and I always trade whenever in intraday I trade. I always try to find out the momentum, and when there is a momentum, I try to get in. So as soon as market will start moving in your direction, you can easily trail your stop loss near your entry point. Now, as soon as you see there's a little movement, a move in your direction, and you're placing the stop loss over there, there are a lot of time the stop loss will be hit. Okay. And there may be brokerage or some break even point. So there'll be small losses, or maybe sometime completely break even. Now, how the psychology develops at that time, I'll tell you. The moment you'll start looking into so many losses, because there's a most of the time there'll be a chance, right, that market will retrace a little after your entry, and then it will start moving in your desired direction. So at that time, if you start looking into lots of losses now, the small gain that you're getting now, you'll also start developing the habit to quickly get out. So you want to come in, you don't want to see huge losses. That's why you're putting
stop loss near your entry point, and as soon as it's hit, then you will also try to take profits at a very small time frame. You will never let it run, and that way you are not developing. That is the main issue with the scalpers as well. They don't want to see huge rewards because they are small stop losses. If you are thinking about the tiniest stop loss or the smallest stop loss, think about it. Markets are there to take your stop losses, but you also need to put the stop losses at respective point, at not any point. Just I'll enter and I'll put the stop loss at my break even point. Okay. So many a times you will actually lose the potential that you will make huge money, because there'll be some time when trade is developing, and in developing trade, unnecessarily if you start trailing your stop loss or putting stop loss at a very tight range, it will take your stop loss and then it will move. Okay. So think about it, that stop loss is the part of your game, right? Don't think that I don't want to give anything to market. That happened with me, that will happen with you as well. Okay. All right. ठीक है. So there's another question. Let me read it out for you. रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो होता है वो ब्रोकरेज पकड़ के मैनेज करना है या ब्रोकरेज छोड़ के? अच्छा, जब बात रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की हो रही है या फिर प्रॉफिट पोटेंशियल की हो रही है, सबसे पहले जो भी ये ब्रोकरेज आ रहा है या एसटीटी चार्जेस आ रहे हैं, रिसेंटली बात चल रही थी कि एसटीटी चार्जेस बढ़ रहे हैं, तो क्या है क्या नहीं है? देखो, पहली चीज, ये जा तो अपनी ही जेब से है, जा रहे ही अपनी जेब से है, तो ये अपने ट्रेडिंग के खर्च है, राइट? जो भी एक बिजनेस के एक्सपेंसेस होते हैं, ये एक्सपेंसेस है। जब आप एंड ऑफ द क्वार्टर देखते हो कि मेरे बिजनेस में मुझे कितना रिटर्न आया, तब हम ये भी देखते हैं ना कि मैंने कितने एक्सपेंसेस किए, तो वो एक्सपेंसेस हटा के हम देखते हैं कि कितना नेट प्रॉफिट हुआ है, राइट? तो जब आप नेट प्रॉफिट की बात करते हो, क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म में तो प्रॉफिटेबल रहना है, आपकी ये ट्रेडिंग जर्नी में आप ये नहीं चाहोगे कि यहाँ पे मुझे कुछ लॉसेस हो तो ठीक है, कुछ प्रॉफिट हो तो ठीक है, बट ओवरऑल अगर आपको प्रॉफिट्स देखने हैं तो आपको सारे खर्चे हटा के देखने हैं। तो यहाँ पे जो भी ब्रोकरेज आ रहा है ना, तो आपके ब्रेक इवन पॉइंट्स जनरली वो ब्रोकरेजेस के ऊपर ही होने चाहिए। ठीक है। तो आपको अगर कभी भी किसी ट्रेड में 1:2 या उससे ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आ रहा है, तो ट्रेल इस तरीके से करो उसमें आपका ब्रेक इवन उससे ऊपर आ जाए, क्योंकि ऑप्शंस के ब्रोकरेजेस ले दे के अगर डिस्काउंट ब्रोकर है तो 40 रुपए का होता है, और उसके साथ कुछ एसटीटी होता है, तो 50-60 रुपए के बीच में ओवरऑल खर्चे होते हैं, एंट्री एग्जिट और पूरे बाकी खर्चों के साथ में। ठीक है। मैं सिंगल टाइम एंट्री सिंगल टाइम एग्जिट की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे टाइम पे वो 10-20 रुपया भी आपको माइंड में रखना है, क्योंकि वो आपके एक्स्ट्रा खर्चे जो आपके ही जेब से जाने वाले हैं। ठीक है। तो यस, ब्रोकरेज पकड़ के ही आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैनेज करना है। ऑल राइट। होता क्या है ना, फ्यूचर में आप ट्रेड कर रहे हो तो दिक्कत आती है, क्योंकि एसटीटी वहां पे बहुत ज्यादा होता है। बट आप अगर फ्यूचर ट्रेड करते हो तो ऑप्शन से आप कभी भी ट्रेड कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मैं फ्यूचर में लॉन्ग करूंगा, है ना, तो आप वहां पे क्या कर सकते हो, आप एक कॉल लॉन्ग कर सकते हो, एक पुट शॉर्ट कर सकते हो। ठीक है। तो आप वहां पे एक सिंथेटिक फ्यूचर भी बना सकते हो, आपके एसटीटी कम हो जाएंगे। ऑल राइट। So there's a guy who is saying thank you for mentorship program. Thank you Prashant sir for equity knowledge and best mentor. एज अ फ्रेंड चिन्मय सर, ऑप्शंस के नॉलेज अभी भी मैं थोड़ा सीख रहा हूँ। बेस्ट मेंटरशिप, थैंक्स थैंक्स अ लॉट साई कृष्णा। ओके। एंड again, if you are a learner at moment, try to deploy as low capital as possible. Once you start getting a grip on one particular setup, one particular trade, right, go for it. All right. So 1 minute time frame में डोजीज ट्रू होते हैं क्या? ओके, देयर इज अ क्वेश्चन ऑलवेज पीपल आस्क मी, सर ये छोटा टाइम फ्रेम काम नहीं करते या सर ये बड़ा टाइम फ्रेम बहुत लैग होता है? वेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कि एक डोजी काम करता है क्या, या फिर एक पेयर ट्रेड करने जाओ, या फिर आप, मैं बोलूँ कि वहां पे एक एनगल्फिंग पैटर्न बन रहा है, क्या ये काम करेगा क्या? आई टेल यू वन थिंग, इफ यू आर अ प्राइस एक्शन लर्नर, whether that price action developed on 1 minute,
5 minute, 10 minute, 15 minute, or on hourly or daily or weekly, monthly, it will work. Price action is universal. प्राइस एक्शन इज नथिंग बट क्या है, वहां पे बायर और सेलर के बीच में एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, ठीक है, और उनके एग्रीमेंट पैटर्न पे यानी आपके चार्ट पे प्रिंट होते जा रहे हैं, ठीक है। अगर बहुत सारे बायर्स एग्रेसिव है और जो भी सेलर आ रहा है बोल रहे हैं भाई तुम बेचो, मैं खरीदने के लिए रेडी हूँ, तो क्या होगा, आपको प्राइस वन वे ऊपर जाते दिखेगा, है ना। टिक बाय टिक वो ऊपर जा रहा है और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको एक सॉलिड मोरिबोजो कैंडल दिखेगी। तो ये क्या दिखा रहा है, ये एग्रेसिवनेस दिखा रहा है। अगर कोई वहां पे एग्रेसिवनेस है तो चांसेस बहुत अच्छे कि वहां पे फॉलो अप बाइंग आए। ये 1 मिनट पे भी होता है, ये 5 मिनट पे भी होता है। बट अगर आप 1 मिनट पे ट्रेड कर रहे हो और आप सोचते हो कि वहां पे जस्ट बिकॉज 1 मिनट पे एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग मोरिबोजू बना है या डोजी बना है ना, वो काम करेगा, तो उसके बाद आप ये मत सोचो कि मुझे वहां पे 1% रिटर्न आएगा, क्योंकि 1% शायद बैंक निफ्टी में 400 पॉइंट होंगे और आपका जो वो डोजी बना है या आपका फिर जो एनगल्फिंग जो भी कैंडल बना है वो शायद 10-15 पॉइंट का होगा, है ना। तो इतने बड़े रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हम नहीं पा सकते। तो अगर 15 पॉइंट का डोजी बना है तो उसके सामने 15, 20, 30 पॉइंट आप देखो। अगेन वो डोजी कहाँ बना है, जहां बना है वहां पे प्रीवियस सपोर्ट है क्या, या बाकी सारी चीजें कॉन्फ्लुएंस कर रही है क्या, अगर वो सारी चीजें हैं तो हायर टाइम फ्रेम प्रोबेबिलिटी भी वहां पे आपके साथ में काम करना स्टार्ट कर देती है। तो हाँ, हर एक टाइम फ्रेम का हर एक टाइप का कैंडल काम करता है, प्रोवाइडेडली उसके साथ में कुछ एडिशनल सपोर्ट वहां पे मिल रहा है क्या। और अगेन छोटा टाइम फ्रेम है तो छोटी एक्सपेक्टेंसी के साथ उतरो, बड़ा टाइम फ्रेम है तो उसके अकॉर्डिंगली आपका टारगेट सेट करो। ओके, ऑल राइट। सो गाइस, आई हैव क्वेश्चन फ्यू, आई हैव आंसर्ड फ्यू क्वेश्चंस। ओके, सो मैं क्या करूंगा, ये जो साइकोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चंस है जो बहुत जेन्युइन है और हर एक ट्रेडर को अपने ट्रेडिंग लाइफ में आते रहते हैं, राइट। तो ये क्वेश्चन जो है मैं ट्राई करूंगा कि आकाश को पॉडकास्ट में लूं और उसके साथ में मैं आपको यहाँ पे आंसर दूं कि छोटे छोटे टाइम फ्रेम के क्वेश्चंस जो थे या फिर प्योर ट्रेडिंग रिलेटेड क्वेश्चंस थे उनको मैंने आंसर देने की अटेम्प्ट की है। इफ यू लाइक दिस अटेम्प्ट एंड यू वांट टू सी कंटिन्यूएशन इन दिस टाइप ऑफ videos, definitely let me know in the comment box. Okay, I'm happy to answer you. Thank you and have a nice weekend, guys.